Okay, so let us start to revise our very good topic, which is known as polynomial. And in polynomial, we are using certain identities. और उन identities को हम क्या बोलते हैं बच्चे? Algebraic identity. So now I am going to write some of the algebraic identity, which you know it very well. Okay, what are these identities? The first one is, I hope आप सभी को इसके बारे में पता होगा, a plus b whole square. We can write it as a square plus 2ab plus b square. I think everyone will know this identity. Come on to next. A minus b whole square is known as a square minus 2ab plus b square. Third one identity, which is very common in terms of factorize a plus b and a minus b. And this particular identity is known as a square minus b square. And these identities are already done in your class 8th also, agar aapko yaad ho. Okay, now come on to the next one. X plus a and x plus b. We can simply write it as x square a plus bx plus ab. The first, the second, the third, the fourth. Okay, so these are the four identities which we are using in our next questions. Now come on to the next one, which is very useful identity, and this identity is known as a plus b plus c whole square. And we know it, when we expand it, we will get a square plus b square plus c square plus 2 times of ab, bc and ac. This is also the identity of our questions. Okay, and in next one, it may be somewhere, it may be positive or negative, like this or something else. Okay, तो ये भी आपके पास क्या हो सकती है, आइडेंटिटीज हो सकती हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. Okay, now come on to the next one. The next identity is a plus b whole cube, which can be written as a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Or mathematically we can also call this identity as a cube. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, 3a square b plus 3ab square and at the last b cube. Okay, now come on to the next one. The next one is known as a minus b whole cube. Okay, which quantity? A minus b whole cube, and we can write it as a cube minus b cube minus 3ab a minus b, or we can write it as a cube minus 3a square b plus 3ab square and minus b cube. These are the identities which we can use for the functioning of our polynomial. इसमें बच्चे एक और भी मैं आ रहा हूँ identities में, which is very very crucial and we can also solve that identity. और ये सबसे अच्छी identity है, which is known as a cube plus b cube. We can prove it also.
Definitely we can prove it. A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC, which is known as A plus B plus C into A square B square C square minus AB BC and AC. Now if we know that if A plus B plus C is equal to 0, okay, if A plus B plus C is equal to 0, so we can say if A plus B plus C is equal to 0, so we can say A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is equal to 0. And we can also use this identity. In this case, A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. And sometime someone said you कि इसको प्रूव कीजिए, तो प्रूव करने का बच्चे इसमें बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मेट रहता है. तो प्रूव करने का क्या होगा कि आप लेफ्ट को राइट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू कैन प्रूव दैट. ओके, तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल आइडेंटिटी फॉर आवर क्वेश्चंस. इसकी मैं एक एग्जांपल अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा. हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी. चेक कीजिए. One question is given in your book and the question is like this: minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube. This is the question. And normally how we can solve it without using identity? How you solve it without using identity? Hanji, everybody. So we will Three first सर इनके find the क्यूब cube of करेंगे minus फिर सॉल्व 12. कर देंगे. -12 into 7 into minus into 5. Yes, normally what we can do कि we will find the cube of 12 then 7 then 5 and फिर उनको हम add subtract कर देंगे. That is the way we can solve it without using identity. But this identity will give you the edge to solve this question in a more sophisticated. How I can say more sophisticated way? Check it. This is A cube, this is B cube and this is C cube. और check कीजिए, what is the value of A? -12. What is the value of B? 7. And what is the value of C? 5. So we can say -12, 7 and 5. Okay, now what is our concern? We know that A plus B plus C in this question is equal to 0. -12 plus 7 plus 5 is equal to 0. And if this is 0, so we can say A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. So you can directly write down the answer 3A, B and C. This is the way we can solve the question. Okay, ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, बड़ा नॉर्मल सा क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट. in a more sophisticated way. हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बच्चे अराइज किया गया कि इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि इनका सम हमारे पास किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो फिर बच्चे हमारे पास वही ऑप्शन बचता है कि वी कैन सॉल्व देम इन अ सेम वे. इनको ओपन करो
and you will get the answer. Okay. चलिए आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करने पे हमारे पास जो नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन बन रही है बच्चे, उस पे आते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. एंड वन मोर क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग फ्रॉम योर बुक. देखिए क्या था. ही सेड एक्सपैंड इट 2x minus y plus z is equal to 0. बच्चे जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो इट्स बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि यू विल राइट इट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आप इसको क्या लिखें कि लेट इट बी 2x प्लस माइनस वाई जेड होल स्क्वायर. ओके, तो सिंपली स्टार्ट विद अवर आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी ए सी एंड बी सी. बस जस्ट इस तरह से ओपन कीजिए. जस्ट राइट डाउन इट 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई कीजिए तो here you will get minus 4xy, here you will get plus 4xz, and here you will get minus 2yz. This is the way we can solve the question. हो जाएगा. Now same kind of question will come to you in this parameter कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. अब चेक कीजिए. सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज लाइक दिस वन. 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy minus 24yz and minus 16xz. Now he can ask you factorize this. Okay, and when you factorize this, तो हमें उसी स्ट्रेटजी को बच्चे यूटिलाइज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, अच्छा इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का बड़ा चक्कर रहता है. हाउ वी कैन राइट देम इन होल स्क्वायर, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 2x स्क्वायर. नाउ हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन सिंपली राइट इट एज 3y स्क्वायर. How we can solve it, we can simply write it as 4z square. Now from these values just take out 2 and write it as 6xy minus 12yz and minus 8xz. अब आगे देखिए बच्चे, 2x whole square plus 3y whole square plus 4z whole square. Now here is my term. देखिए 6x and y, just write it as 2x 3y. Okay, now in this category of questions देखिए कैसे बनेगा, कैसे questions, तो you will simply write it. देखो y वाली टर्म z है एंड z है, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 3y minus 4z. नेक्स्ट फॉर्मेशन 2x minus 4z. और ये लीजिए बच्चे आपका क्वेश्चन रेडी है. इफ यू कंसिडर दिस क्वांटिटी एज a, this as b and this as c, so it becomes ab, bc and ac. Now how we can write it, we can simply write it as 2x plus 3y minus 4z whole
square. तो this is the reverse of our questions. ठीक, first of all he said expand it, तो हमने expand कर दिया, and in the second case he said factorize it, तो हमने factorize कर दिया. इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा. एंड some question of this kind will also ask you कि solve this with the help of identity. I think everybody knows this question. हाँ जी, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, how we can start with this question. सर इसमें हम Sir, 100 100 plus प्लस 2. 2 का होल क्यूब कर 100 देंगे. plus 2 whole cube. Yes, हम इसको क्या कर देंगे, 100 100 प्लस 2 का होल क्यूब. ठीक. Sir, this can be solved by 100 plus 2 and then whole cube. We can do it. Yes. Yes. तो बिल्कुल आगे आ जाइए बच्चे. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस तरह के रेफरेंस में आपके पास क्या होगा, डिफाइन किया जाएगा कि हम इसको इस तरह से क्या करें, सॉल्व करें. ओके, अब दिस कैन बी रिटन एज 100 plus 2, and if somebody asks you this question, 998 power 3, how you will write it? Sir, 100 minus 2 cube. 1000 minus 2 का होल क्यूब. Minus 100 क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब. So 1000 minus 2 whole cube. 1000 minus 2 the whole cube. 1000 minus 2 whole cube. ओके, एंड उसको फिर हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सर बाय आइडेंटिटी. बाय आइडेंटिटी. ठीक, तो बिल्कुल उसी तरह से हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. आई थिंक इट्स द इजीएस्ट वन विच वी आर सॉल्विंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ दिस वन. एक अच्छा एक और देखिए बच्चे, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड यू. ही सेड if 3x square minus 12x representing volume, what are its dimensions? Length, breadth, and height. सर 3x and x minus 4. सर इसका फैक्टर होएगा. बिल्कुल बच्चे, ट्राई टू मेक द फैक्टर्स. तो फैक्टर्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्ड किया. तो वी जस्ट टेक द टर्म 3 कॉमन and we can write it as into x minus 4. x square minus 4, and this can also be written as Sir, 4x. yes सर आपने 3 के बाद 4 x भी 4 लगाया. 4x. ठीक, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज क्या आएंगी बच्चे, व्हाट वी कैन टेक, वी विल टेक x अगेन एज अ कॉमन. तो यू विल सी we will get 3 format are there, 3x and x minus 4. So we can simply say this is the length, breadth and height of our question. मैं अभी आपको एक इसी तरह का क्वेश्चंस बच्चे और दे रहा हूं. Try to find out this answer कि how we will solve this particular question. Check कीजिए. Same kind of question is there. If somebody asks you factorize this 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz.
हाँ जी, आप में से अगर कोई भी मेरे को बताना चाहे कि यस वी कैन डू दिस क्वेश्चन। यस आयुष। सर सबसे पहले तो ये 27x³ को हम 3x³ ले लेंगे। Okay, फिर just we will start with this. We can write it as 3x cube, okay, प्लस y³ y cube प्लस z³ plus z³ z माइनस cube minus -3 ब्रैकेट में 3x इंटू वाई इंटू जेड। और फिर सर ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देंगे इसमें। okay. हाँ, आइडेंटिटी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग थी बच्चे। इफ यू नो द आइडेंटिटी इज a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ac. So similarly we can find out the factors 3x plus y plus z and check कीजिए बच्चे a square 9x square b square y square z square minus ab 3xy bc yz and ac 3xz. This is the question. Got my point? जिसको हम अपने ठीक फॉर्मेशन में सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और आते हैं बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस में थोड़ा सा और आता हूं। एक आपको याद होगा कल भी मैंने एक क्वेश्चंस किया था, तो आज मैं फिर से उसको एक बार रिपीट कर रहा हूं, ओके, कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। कल हमने चेक किया था कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड, हाउ वी फैक्टराइज दिस x cube minus 3x square minus 9x minus 5. This is called cubic. क्या बोल रहे हैं हम इसको? क्यूबिक बोल रहे हैं। तो हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस पर्टिकुलर टर्म? हाँ जी, एनीबॉडी? ऑल यू आर ओपन राइट। Which method we can apply to factorize this? सर सबसे पहले हम By इसका कोई splitting एक midterm. फैक्टर नहीं, निकालेंगे। just tell me what By it is. hit and trial method. Yes. Trial method. Hit and trial method. Trial method. So for hit and trial method, we will just check what is the constant member of this family. Constant term कौन सी है बच्चे? 1 minus 1. 5. 5. Okay, this is the constant term. Now what we can check, 5 can be a factor of, देखिए किसका, either plus minus 1 or plus minus 5. Now we can trial with these two quantities. याद है बच्चे? डिलीट हो गया या नहीं होगा डजेंट मैटर, वी आर जस्ट सॉल्विंग, ओके, डोंट वरी कि ये डिलीट हो गया, ओके। तो व्हाट वी कैन से, वी विल जस्ट राइट इट एज px एंड वी आर गोइंग टू ट्राई इट विद 1। तो पहले हम 1 को पुट अप करेंगे, दिस इज कॉल्ड
hit and trial. 1 cube 1 minus 3 minus 9 minus 5, which is not equal to 0. So we can say x is equal to 1 is not a 0. Now we come to the next one. P of minus 1. What we can write? Minus 1. This becomes minus 3. This becomes plus 9 and this is minus 5. Now it is equal to 0. यानी हमारा जो ट्रायल था वो सक्सेसफुल रहा and we got 1 0 which is known as x is equal to minus 1. -1. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, आइए sir. नेक्स्ट अब वन हम क्या होता है? लॉन्ग नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड यूज करेंगे। यस, मैं आपको एक और तरीका भी बता सकता हूँ लॉन्ग डिवीजन की बजाय। सर आपने बताया था एक। ओके चलिए फिर उसी के साथ करते हैं लॉन्ग डिवीजन। तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज हाउ वी कैन मूव ऑन। चलिए एक बार मैं दोनों मेथड बता देता हूँ, चेक कीजिए। तो वी विल मूव विद लॉन्ग डिवीजन लाइक एक्स क्यूब माइनस 3x। स्टार्ट कीजिए। आई विल गिव यू 2 minutes टू सॉल्व इट। जस्ट गिव मी द क्वेश्चन। सर एक्स स्क्वायर ऐसे से ऐसे करेंगे। ऐसे ऐसे हाँ हाँ करो करो जल्दी एंड आई विल आस्क यू फॉर आंसर। Okay, very good. I got many responses. चेक कीजिए बच्चे। Just as you have said to me, first of all, we can multiply with x square. We got x cube minus x square. Just change the sign. You will get, sorry, यहाँ plus होना था. So you will get minus 4x square minus 9x minus 5. Okay. Multiplied with 4 x, so you will get minus 4x square minus 4x. Change the sign. Minus 5x minus 5 multiplied with minus 5. So you will get minus 5x minus 5.
and ultimately you will get the answer. Very good. आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया with the same method. Now check कीजिए. Now you will get two methods, two factors. First is x plus 1 and second is x square minus 4x minus 5. Now tell me how we move on. So we Now- will factorize x square minus 4x minus 5. Ma'am, sir, then now we will do middle term split. बस that now we will start with splitting the middle term. But एक चीज और आई है बच्चे, अब आपको एक नई चीज करवाता हूं. Check my point. देखिए, now we are solving these question with another method. आपको लॉन्ग डिवीजन से अभी हम शॉर्ट में लेके आएंगे. ओके, तो चेक कीजिए हाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, तो उस नेक्स्ट पार्ट में हम जब डिफाइन करने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज इस तरह से क्या की जाएंगी, ड्राइव की जाएंगी. तो माय फर्स्ट पार्ट इज which I am going to solve here. Check कीजिए. First of all, I will write the coefficient of x cube. वो 1 हो गया. Coefficient of x square -3. Coefficient of x is -9. And coefficients of constant term is -5. ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, टर्म्स की वैल्यूज हैं जिनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, या जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. अब आगे देखिएगा. कि हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या होगा. ओके, चेक कीजिए. व्हाट इज द वैल्यू -1, यानी फर्स्ट जीरो क्या था, -1 था. बच्चे आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मैं जो अभी करने जा रहा हूं. जस्ट राइट दिस वन एज इट इज. मल्टीप्लाई -1 with 1, तो यू विल गेट -1. ओके, आपके पास सम करने पे टर्म कितनी आ गई, -4. मल्टीप्लाई दिस -1 with -4, यू विल गेट +4. ऐड कीजिए, you will get -5. Now multiply this minus with -5, you will get +5. Add कीजिए, तो this is 0. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं how we will write the quotient. देखिए, इस टर्म के साथ क्या था, x cube. इसके साथ क्या था, x square. Here x and this is constant. Now what we can do, now we will place first term with x square, second term with x, and third term as constant. तो this is called Horner method. ये आपको लॉन्ग डिवीजन से बचाता है. We call it Horner method. चेक कर लीजिए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट, या किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. यस बच्चे. सर मुझे प्रोसेस तो समझ में आ गया, लेकिन आपने उसको फिर लास्ट में राइट डाउन कैसे किया फाइनली? सर वो एक फाइनली बार फिर बच्चे, से. जस्ट व्हाट आई हैव सीन हियर, मैंने ये कोफिशिएंट देखे. ओके, 1 -4 एंड -5. अच्छा, इसमें बड़ी बात कुछ भी नहीं है. हमने पता क्या किया है, हमने जस्ट x को रिमूव किया है ये यही प्रोसेस, ये लॉन्ग डिवीजन ही है, बट इस लॉन्ग डिवीजन को हमने शॉर्ट कर. गॉट इट? इस लॉन्ग डिवीजन को हमने क्या कर दिया,
शॉर्ट फॉर्म में ले लिया कि ये भी आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। हाँ जी, यस बच्चे। सर इधर -1 क्यों आया, मतलब कैसे आया? क्या आया? सर -1। -1 तो पहले हमने ये ट्राई नहीं किया था इसमें हिट एंड ट्रायल में, तो फर्स्ट हमारे पास 0 तो -1 ही था, बस उसी के साथ हमने नेक्स्ट को क्या किया है, परस्यू किया है। नहीं सर, मैं उस -1 की बात कर रहा हूँ जिसको अपन ने मल्टीप्लाई करा है। ये -1, हाँ हाँ, ये वाला। तो ये वही वाला -1 है ना, ये वाला जो पहले हमारे पास सक्सेसफुल हुआ था, जो ट्रायल में सक्सेसफुल हुआ था, तो दिस इज द फैक्टर। उसी फैक्टर को हम आगे क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, ओके सर। सर आप एक बार ये वाला मेथड फिर से रिपीट कर देंगे कि सर हम -1 के बाद सर उससे क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना। ओके, तो वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन। चेक कीजिए, पता चल गया ना। एंड नाउ यू कैन फैक्टराइज दिस, जो हमने पहले भी किया हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूं, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। हियर इज माय क्वेश्चन। ही सेड x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल try to find out by hit and trial method. Just send me the message कि this can be a formation of this question. सर -1। एक मिनट करने दीजिए सभी को। वेरी गुड। सर -1। ओके, -1। -1। -1। चलो we will check it whether it is successful or not. चलिए आपने बच्चे अब एक ट्राई किया कि हेयर x इज इक्वल टू -1 इज द फैक्टर। अब देख लीजिए जो मैंने पहले किया था, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। ओके, x इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड 0, और अगर मैं इसका फैक्टर लिखूंगा तो फैक्टर इज कॉल्ड x+1। अब देखिए हाउ आई कैन ड्राइव इट विद सिंपल मेथड। तो हियर इज माय टर्म x³ 1, x² 13, 32 एंड 20। प्लीज चेक इट। मैंने जस्ट कोफिशिएंट लिखे हैं। ओके, क्या लिखे हैं? कोफिशिएंट। जस्ट राइट डाउन द कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स। लिखेंगे। तो कोफिशिएंट्स लिख लिए गए। ओके, अब हम इनको क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट्स को आगे परस्यू करेंगे बच्चे, और वो कैसे परस्यू करेंगे वो भी आप देखिएगा। ठीक, एंड नेक्स्ट केसेस में हमारे पास जितना भी फॉर्मेशन है, या हम कह दें कि कैसे हम इनको आगे मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सबसे जो पहला फ्रेम होगा,
I will write down the -1. अब चेक कर लीजिए, तो I will write simple one here. Multiplying this -1 with 1, I got -1. Adding both these terms, we got 12. Now multiplying this -1 with this, we got -12. Adding these, we got 20. Now multiply this 20 with -1, it is -20. और चेक कर लीजिए बच्चे, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर्मेशन के अंदर आ रहा है। ओके, तो वी कैन सॉल्व द फॉर्मेशन। ओके, तो लीजिए अब आगे मैं इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट में ले रहा हूं बच्चे। तो नाउ आई कैन राइट दिस वन एज here 1x square, here 12x, and here 20. एंड अब आप इसके क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, एंड यू विल गेट द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। यस, अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो इसके तो बच्चे 2 फैक्टर्स आर x plus 10 and x plus 2, and here is x plus 1. These are the 3 factors of our question. Got it? हाँ जी, आप सभी ओपन है। इफ यू गेट want to know any query सर or जब any doubt, Sir, आपका what is this method called? this method, this method, Yes, sir. this is called Horner method. Horner method of long division. सर जब आपका 1x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 आ गया, फिर इसको आपने स्प्लिट द मिडिल टर्म किया। यस यस यस, उसके बाद तो फिर आप सब को आई थिंक नोन है ना। Yes, sir. उसके बाद तो सब जानते हैं ना कि ये हमारे पास इस तरह का रहेगा। Got it?